Indian Railways is deploying a high-tech shield to protect its massive land bank. Addressing the Rajya Sabha during question hour, Railway Minister Ashwini Vaishnaw revealed that while the national transporter owns nearly 5 lakh hectares of land, 1,068 hectares currently face illegal encroachment. This represents roughly 0.21% of the total holding. भारत की जो रेलवे नेटवर्क है भारत का, उसमें प्रैक्टिकली पूरे देश में करीब 0.21% लैंड है जो कि एनक्रोचमेंट में है, इलीगल एनक्रोचमेंट में। रेलवे के अगर लैंड का हम पूरा यूटिलाइजेशन देखें तो करीब करीब 80% लैंड रेलवे के जो ट्रैक्स हैं और करीब अनदर 5% लैंड करीब जो रेलवे के ट्रैक्स के बिल्कुल पास में सेफ्टी वाला एरिया होता है, वो सेफ्टी मार्जिन में रहती है। बाकी 15% लैंड है जो स्टेशंस में, कॉलोनीज में, हॉस्पिटल्स में, इन सब में उसका उपयोग होता है। ये बात सही है। बहुत ही एक ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। कई जगह शहरों में इलीगल एनक्रोचमेंट रेलवे की लैंड पे हुए। समय समय पे इस पे एक्शंस भी बहुत सारे लिए गए, लेकिन हर वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम किया गया है, क्योंकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वही एनक्रोचमेंट या रेलवे की लैंड के साथ झुग्गियाँ झोपड़ी बना के रहता है। लेकिन जहाँ पर भी संभव हो पाया है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर माननीय चेयरमैन सर लिया गया है। The minister detailed land utility. 80% stays dedicated to tracks, 5% for safety margins, and 15% for stations, hospitals, and colonies. To prevent new illegal occupation, the ministry has fully digitized all land records on a dedicated electronic portal. Vaishnaw highlighted a major shift toward AI-driven surveillance using satellite imagery and drone-based surveys. By comparing real-time maps with digital reference records via AI algorithms, the railways now identifies and stops new encroachments almost immediately. Addressing legacy jhaggi clusters, the government is adopting a humanitarian approach in coordination with state governments. In Surat, authorities successfully reclaimed land by providing alternative housing under the PM Awas Yojana. Over the last 5 years, 98.02 hectares have been reclaimed. रेलवे की लैंड को प्रोटेक्शन के लिए कई अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स जो लिए गए हैं उसमें कंप्लीट रेलवे की कंप्लीट लैंड का डिजिटाइजेशन, उसका प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक लैंड रिकॉर्ड्स का पोर्टल, ईच एंड एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्रॉपरली मैप्ड और उसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक उसका प्रिजर्वेशन किया गया है। साथ ही साथ सैटेलाइट से और ड्रोन से लगातार उसका सर्वे भी होता है। तो ओवरऑल फर्दर एनक्रोचमेंट एक सिग्निफिकेंट मात्रा में रुक चुका है। अब जो एग्जिस्टिंग एनक्रोचमेंट है उसके बारे में एक प्रॉपर इनफैक्ट माननीय सांसद महोदय को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ अच्छे उदाहरण भी है। जैसे सूरत में राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एनक्रोचमेंट में थे उन लोगों को घर देने का वादा किया। तो वहाँ पर एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन तरीके से, बहुत ही एक अच्छे तरीके से ज़मीन खाली भी हुई और आगे डेवलपमेंट का काम भी उसमें आगे बढ़ा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ राज्य सरकारों की मदद मिलती है वहाँ पे काम हो पाता है, क्योंकि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार के लिस्ट में ही आता है, राज्य की लिस्ट में आता है ज़मीन का मुद्दा। इसलिए हम लैंड के लिए राज्य सरकारों के साथ ही काम करते हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे एनक्रोचमेंट रिमूवल के लिए हो, हर एक विषय में उसमें राज्य सरकार के साथ मिलकर ही काम करते हैं। वी आर यूजिंग 2 बेसिक टेक्नोलॉजीज, वन इज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड सेकंड द ड्रोन बेस्ड सर्वे, एंड बोथ दीज आर प्रोड्यूसिंग मैप्स which are then compared with the reference maps that we have for the entire network, and basis those reference maps we are able to use AI and other algorithms to find out if any new encroachments have happened, and then we are able to take immediate steps. That's why practically fresh encroachment has significantly reduced or almost stopped. That is the situation. The problem is more of the encroachment which has been there for many decades now.
Surplus land is now managed through transparent tendering via the Rail Land Development Authority. This initiative is expected to generate 900 crore rupees in revenue this fiscal year. Used lands, which Honorable Member has pointed out, we have created a very transparent mechanism, and the results are visible. Over the last few years, we have been able to create a very transparent mechanism. We tried multiple ways. Railways has an authority called RLDA, Railway Land Development Authority. That authority was created many years ago, but somehow in between, during the UPA government, many steps were taken which were not very transparent. So practically that work almost got stopped. But in the recent times, very transparent methods have been created by which today, in a very authentic tender-based mechanism, where the lands are then used for commercial development or housing development. So those projects have come out very well. There is one project in Ludhiana I can share with Honourable Member, where a very large multi-story building has been constructed on the unused land. There are similar examples in Bengaluru, examples in Chennai, another example recently coming up in New Delhi area. There are in Bhubaneswar. In so many cities, the unused land is now very transparently auctioned, or rather developed, in which there is a revenue share mechanism discovered through a tender process. And in the year 25-26, the current financial year, we are expecting about 900 crore rupees of revenue out of that. And this is going to increase significantly because of the way the program has been structured. But as I pointed out right in the beginning, Honorable Chairman Sir, most of the land of railways, the numbers look very large, but most of the land of railways, about 80% is along the tracks, and about 5% is that safety margin. And after that, the land which is left, which is a very large number, that is the land which has been left for expansion of the railway network. And as you would have noticed, in the last many years, many new doubling, quadrupling, third line, these projects have been sanctioned by the government, and that is because, that is one of the reasons why today railway is able to cater to so many passengers, especially at the people of the low income and middle income families. So today we are able to run about 80,000 special trains, and that is because we have been able to increase the capacity, and that is the thought process, that we should try and preserve these lands and use that for expanding the railway network.